Assalamu alaikum, dear viewers. I uploaded one lecture a bit earlier, and I think that lecture was quite informative. It was really enriching in terms of equipping you all with essential bits and pieces of the English language. In today's lecture, we have brought, a couple of topics. One being the verb and subject agreement, which is a much talked about topic, and the second is going to be some adjectives with some suitable nouns, adjectives collocating with some suitable nouns. So I'm very confident that this lecture is going to be very insightful and very informative. At the same time, I consider it my bounden duty to keep you all worthy members of this prestigious page updated. That very soon I'm going to bring more lectures on grammar and on different concepts of grammar, vocabulary, and we'll be having some vlog sessions as well, in which we'll be discussing different current affair topics, international affair topics related to everyday life. And I'm sure that those sessions are going to be really enthralling, they're going to be really informative and captivating. So without any more ado, I believe we should straight away move to the topic. And the topic is, as I've written over here, agreement of the verb with subject. Now this is a very, very important topic that we need to know. What does this topic basically mean? It means that if your subject is singular, it has to have a singular verb. If your subject is plural, it will have a plural verb. That's what it means, subject-verb agreement. Now I've jotted down a couple of sentences here. There are a few sentences, and I'll be explaining how this rule applies to all these sentences. So the first sentence is, the quality of the mangoes dash not good. Now we need to have something so as to put it here. We need to fill this very blank. So we need to identify what our subject is, and not only that, as we know, a sentence has got two parts, the subjective part and then the predicative part. We need to know both the parts. That's really crucial to the essential understanding of a sentence, what a sentence is. You need to know the subjective part and the components that it has, and then you need to know the predicated part of a sentence, that what comes in the predicate of a sentence, right? So now we are taking a start from here, like the quality. Now you see the quality of the mangoes, that's all. Now we will be considering this whole as a subject of this very sentence. But our key subject over here is this, the quality, right? This is the key subject. And then over here we have got our preposition. This is the preposition of, right? So, and the mangoes, we know that a preposition always takes a noun after it as its object. So this, the mangoes. Now this are the object of the preposition of. So it doesn't have to do anything with our key subject of the sentence, which is the quality. अब ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो यही है, द क्वालिटी. और ये जो ऑफ के बाद द मैंगोज हमने लिखा है, ये जो द मैंगोज है, ये एक नाउन फ्रेज है, और ये नाउन फ्रेज ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसका कोई लेना देना द क्वालिटी से नहीं है. ठीक है, हम इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन की सब्जेक्ट हमारे क्या है, द क्वालिटी. तो अगर हम देखें तो क्वालिटी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ हमने वर्ब भी क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, इज, यानी इज नॉट गुड. अच्छा, अब ये गुड क्या हो गया, ये जो हमारे पास यहाँ पे आया है, व्हाट इज दिस, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है. दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट, राइट. नाउ हमने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है. सिमिलरली एक और सेंटेंस हम देखते हैं, द इंट्रोडक्शन. नाउ अगेन दिस इज आवर की सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. अगेन यहाँ पे क्या आया है, ऑफ आया है, ये प्रेपोजिशन है, और ऑफ के बाद हमने लिखा है टी एंड कॉफी एंड सच आर द बेवरेजेस. ये सारे देखें, ये पूरा एक नाउन फ्रेज बन गया है जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है.
ये पूरा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा की सब्जेक्ट क्या है? द इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। ये सारे इसके ऑब्जेक्ट है और ये सब प्रेपोजिशन ऑफ के ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इनको देखेंगे तो हमारा की सब्जेक्ट द इंट्रोडक्शन हो गया। अगर इंट्रोडक्शन हमारा की सब्जेक्ट है और हमें पता है कि वो सिंगुलर है, तो हमें यहां पे क्या लगाना होगा? अच्छा, क्योंकि बीन आगे आ चुका है, अगर बीन आ चुका है तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। सो दिस इज व्हाट द होल सेंटेंस इज। सेकेंड आप देखिए हिज नॉलेज। ये जो हिज नॉलेज है ये अगेन हमारा क्या है? की सब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये पूरा जो है ऑफ वेरियस ऑफ इंडियन वर्निकुलर्स। अच्छा, ये जो इंडियन वर्निकुलर्स है यानी हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्निकुलर्स, ये सारा इसका क्या है? ये पूरा जो है इसका ऑब्जेक्ट है, यानी हिज नॉलेज ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट है। फिर यहां पे हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं ऑफ, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। अच्छा, इस प्रेपोजिशन का ये पूरा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये इंडियन वर्निकुलर्स जो है ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, लेकिन की सब्जेक्ट हमारा क्या है? हिज नॉलेज है। तो अगर नॉलेज, हिज नॉलेज हमारा की सब्जेक्ट है तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। His knowledge of Indian vernaculars is far beyond the common. Now, vernaculars means the different languages or dialects that are spoken in India. अच्छा, यहाँ पे आप देखें, सॉरी ये थोड़ा सा मिट गया था, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ये हमारे पास क्या है? द स्टेट। असल में ये हमारा की सब्जेक्ट है, द स्टेट। ये प्रेपोजिशन है और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स such as to cause anxiety to his creditors. The state of his affair is such, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? is लगाएंगे। is such as to cause anxiety to his creditors, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। द रिजल्ट्स, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या हो चुका है? ये हमारा प्लूरल हो गया है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है, ये तो हमारा प्रेपोजिशन ऑफ है। इस प्रेपोजिशन से पहले जो आएगा उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसी को हम मानेंगे। प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी आ रहा है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाते, ठीक है। अब ये पूरा जो है द रिकग्निशन ऑफ दिस फैक्ट, ये फिर इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द रिजल्ट्स ऑफ द रिकग्निशन ऑफ दिस फैक्ट्स आर सीन इन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो यहां हम इसकी जगह क्या लगाएंगे? यहां हम लगाएंगे आर। ये वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। टाइम एंड टाइड, अब ये हम एक एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं। समथिंग रेफरिंग टू अ सब्जेक्ट रेफरिंग टू वन आइडिया, ये एक ही कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करता है तो हम इसको क्या मानेंगे? इसको सिंगुलर मानेंगे। टाइम एंड टाइड, यहां पे हम लिखेंगे वेट्स, वेट्स फॉर नन। अच्छा, लेकिन यहां पे आप देखें, यहां पे हमारे पास ये तो आ गया है एंड जो एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, मतलब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, अब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, लेकिन असल में ये क्या है? ये एक ही वो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम वर्ब भी क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज़। So this is what what the concept of subject verb agreement is. अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है suitable adjectives with the following nouns. मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास long adjective है और siege हमारा क्या है? noun है, a long siege. अच्छा, इनको हम एक और नाम भी दे सकते हैं and that name would be collocation. वो क्या होगा? इसको हम कहेंगे collocation. Now you must be wondering what a collocation is. Collocation क्या होता है? Words or phrases that frequently
uh, that frequently, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, that frequently come together, मतलब कुछ ऐसे phrases वर्ड जो एक साथ अक्सर आते हैं. तो ये पूरा अब आपके पास एक नाउन फ्रेज बन गया है. अ लॉन्ग सीज, अ डिसाइसिव विक्ट्री, अ पॉपुलस सिटी, a devoted husband, a frightening silence, a life altering advice, an industrious student, a polite servant, a lively city, a careless king. Now, these all are some noun phrases. A noun that has been preceded by some suitable adjectives. I mean, if you bring in collocation in your writing, it does add a lot more charm, flavor into your language, and it makes your language, your writing, your communication more intriguing. So I recommend you to, work on these collocations and make them the part of your writing, because they literally help you in improving your, language skills or language comprehensions. I hope this was an interesting lecture. It must have given you lots of, new ideas in terms of what a subject and verb agreement is and what collocations are. It must have been very rewarding and enriching experience. With this, I would like to conclude this very lecture, and I'll be meeting you soon back in another lecture. Stay blessed. Thank you very much.